Hello viewers, today I am going to discuss some very important topics of inorganic chemistry, atomic property and their periodicity. In last lecture, I have discussed effective nuclear charge and atomic radius. Effective nuclear charge is part of nuclear charge effective on valence electron of the atom. It arises due to electrons of outer two orbits in the atom having shielding effect less than 1. So, effective nuclear charge should increase in a period due to increase in atomic number, or in a group, first member of the group belonging to second period has a small value of effective nuclear charge, and last member of the group belonging to sixth period have greater value of effective nuclear charge due to presence of 14f electrons in inner orbit having poor shielding effect, and other members of the group has almost same effective nuclear charge. So in general consideration will assume that effective nuclear charge in the groups are almost equal. Now comes to the topic. Ionization enthalpy or ionization energy or ionization in potential or नाम है work function. The minimum energy required to remove an electron from isolated outermost orbit of an isolated or gaseous atom is called ionization energy. It is expressed in kilojoule per mole. Isolated atom, when interatomic force is 0. This condition arises in gaseous state. So, ionization energy removed an electron from outermost orbit of an isolated atom. During removal of electron from the atom, one has to do some work against the nuclear force of attraction. So, energy is consumed and value of ionization energy becomes positive. आप जानते हैं कि any displacement against the nuclear force of attraction has consumes energy. So, a stronger nuclear force of attraction on an electron of outermost orbit is responsible for greater value of ionization energy. When more than one electrons are removed from the gaseous atom, first electron remove हो रहा है I1, second electron remove हो रहा है I2, third electron remove हो रहा है I3. So these are called successive ionization energy. So for an atom, I1 is less than I2 less than I3, because first electron is removed from a gaseous neutral gaseous atom, second electron monovalent gaseous cation, third electron divalent gaseous cation. As charge on atom increases, effective nuclear charge increases and atomic radius decreases, or nuclear force of attraction on electrons of outermost orbit increases, so I value increases. A very important point. There is a large difference between successive ionization energy of corresponding to last valence electron and first core electron. Last valence electron की सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट कोर इलेक्ट्रॉन की सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच डिफरेंस काफी ज्यादा होगा. फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन विद टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन I1 less than I2 and I2 very much less than I3. Large difference between I2 and I3 because third electron is core electron. Factors affecting ionization energy. As I have discussed that a stronger nuclear force of attraction on electron of outermost orbit results in greater value of ionization energy. So we have to work against a stronger nuclear force. So Z effective increase in Z effective results increase in nuclear force of attraction on electrons of outermost orbit or increase in value of ionization energy. Atomic radius.
distance between nucleus and electrons of outermost orbit. So increase in atomic radius results decrease in nuclear force of attraction on electrons of outermost orbit due to increase in distance. Hence, ionization energy decreases with increase in atomic radius. Sir, nature of orbital, ये आप रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़े होंगे 3s 3p 3d. तो 3s के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस पर है, लेकिन और कुछ समय के लिए इनर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पेनेट्रेट करके यहाँ और यहाँ भी आ रहे हैं, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पेनेट्रेट कर रहे हैं. So penetrating power of electron in s penetrating power of electron to inner electron cloud in s orbital is greater than p orbital than d orbital. So nuclear force of attraction on electron of same orbit is stronger than s than p than d. So ionization energy for s electron is greater than p electron than d than s. For example, beryllium 2s2 and boron 2p 2s2 2p1. बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से निकाला जा रहा है और बोरन का पी ऑर्बिटल से निकाला जा रहा है. तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरन इज ग्रेटर देन बेरिलियम. Stability of electronic configuration. As we have discussed in atomic structure, half-filled and completely filled substances are more stable, having lower energy. So greater amount of energy is released, consumed in removal of electron from more stable half-filled and completely filled substance. So ionization energy of such atom is greater. For example, nitrogen 2s2 2p3 and neon 2s2 2p6. Periodicity of ionization. For atom of a group, atom of a group, the effective nuclear charge are considered to be almost equal and atomic radius increases. So, ionization energy should decrease in a group with increase in atomic number from top to bottom, group 1 and group 7. For atoms of a period, the effective nuclear charge increases and atomic radius decreases. As a result of this, ionization energy should increase in a period with increase in atomic number, but there is some anomaly due to electronic configuration. Like increase करेगा, but beryllium becomes greater than boron due to s and p orbital. Nitrogen becomes greater than oxygen due to half-filled configuration in p subshell in nitrogen atom. IE2 का ऑर्डर प्रिंसिपल वही है. लिथियम का सेकंड इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम वेरी मच ग्रेटर देन बेरिलियम. अब एस और पी वाला कंडीशन अराइज होता है बिटवीन बोरन एंड कार्बन, एंड हाफ फिल्ड कंडीशन अराइज होता है फॉर ऑक्सीजन. एलिमेंट ऑफ मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज कर रहा है और ग्रुप में डिक्रीज कर रहा है. तो लास्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल ग्रुप 18 हीलियम एंड का मैक्सिमम होगा और फर्स्ट पीरियड अल्कली मेटल में सीजियम का मिनिमम होगा. अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन आई वैल्यू. एटम विथ लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर्म केटायन रेडली बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी खर्च हो रही है. So the element with lower ionization energy value has more metallic character. Because electron lose करके केटायन बनाना मेटल का कैरेक्टर होता है, तो ये आसानी से केटायन बना रहा है. Greater reactivity as metal. इलेक्ट्रॉन डोनर बेस होता है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए मोर बेसिक कैरेक्टर. एंड रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा. Some question asked, I2 is maximum for answer to IE2 beryllium. IE1. IE1. So
बेरिलियम मैग्नीशियम ग्रुप 2 है और बोरन एल्यूमिनियम ग्रुप 3 है। तो आप पढ़ें एस और पी में बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा बोरन। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी I1, I2, I3, I4 दिया हुआ है। So there is large difference between I3 and I4. So valence electron in atom is 3. Correct order of I2 कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ऑर्डर दिया हुआ है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ I2 इन लिथियम बेरिलियम बोरन। तो लिथियम 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, देन बोरन, देन कार्बन, देन बेरिलियम। Energy required for ionization of 0.02 mole of Mg is X kJ. Then amount of energy required to 1 magnesium atom. So 0.02 मोल, तो 1 मोल के लिए हो जाएगा x/02 and for 1 atom x/02 divided by n और मल्टीप्लाई जूल में देना है, इट इज 3। तो सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों दिया हुआ है। करेक्ट कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल 270 एटम की 270 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम Al to Al3 प्लस वेपर स्टेट। तो 1 मोल के लिए इस कन्वर्जन में एनर्जी कंज्यूम होगी आपको 578 टोटल एनर्जी Al से Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एनर्जी खर्च हो रही है 578 प्लस 1817 प्लस 242745 किलो जूल पर मोल। ये 1 मोल के लिए होगा और 270 ग्राम मिलीग्राम, तो 0.27 मतलब 0.01 मोल हो गया। तो आंसर बिकम्स 2। Electron gain enthalpy, energy released, just reverse to ionization enthalpy. Energy released during addition of an electron to outermost orbit of an isolated or gaseous atom is called electron gain enthalpy. X gaseous में एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, एनर्जी रिलीज होकर X माइनस gaseous में आ रहा है। तो ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एटम it is displaced towards nuclear force of attraction. So any displacement towards nuclear force of attraction results in release of energy. So an electron gain enthalpy becomes negative. So a stronger nuclear force of attraction on incoming electron is responsible for release of greater amount of energy or more negative or greater value of electron gain enthalpy. यहाँ एक confusion clear कर रहा हूँ। More negative value को greater electron value माना जाएगा। Earlier electron affinity was used in place of electron gain enthalpy. EA is defined as energy released in addition of electron to an atom at absolute zero, and its value was taken as positive, contrary to thermodynamics. So now electron gain enthalpy becomes minus EA, so the positive था तो minus करना और 5/2 आती है वैल्यू फॉर हीट कैपेसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन gain enthalpy 298 केल्विन नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया जा रहा है। हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैव एट द हायर टेम्परेचर हीट कैपेसिटी प्रोडक्ट हैव टू कंसीडर। So in general, the electron gain enthalpy is almost same, minus EA. When more than one electrons are added to a gaseous atom, first electron add हुआ, first electron gain enthalpy, second electron add हुआ, second electron gain enthalpy. So second electron gain enthalpy is always positive because second electron is added to a gaseous anion which will repel each other
due to similar charge. Like oxygen atom में the overall formation of O2 minus ion is endothermic. Factors affecting electron gain enthalpy similar to ionization enthalpy. A stronger nuclear force of attraction on incoming electron results in greater value of electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy increases with increase in value of Z factor. Greater value of atomic radius results lower value of electron gain enthalpy due to greater distance between nucleus and electrons of nucleus and outermost orbit. Electronic configuration, ध्यान दें. For atom consisting only completely filled subshell in outermost orbit. Atom में सारे existing subshell completely filled हो. So incoming electron goes to subshell, a new subshell of higher energy. So energy of system increases or energy is consumed and delta Eg becomes positive or a smaller value. When electron is added to more stable half-filled subshell of atom, P3 से P4 हो जाएगा. So stability of subshell decreases. So value of electron gain enthalpy decreases. It becomes less negative or positive. ग्रुप 15 में ये कैसे राइज हो रहा है, वैल्यू दिया हुआ है. वन मोर थिंग, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम हैव वेरी स्मॉल साइज, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होगा. तो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर से जोड़े ये इलेक्ट्रॉन को कुछ सम एक्सटेंट रिपेल करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सेप्शनली लो होगी. एक लाइन में आप कह सकते हैं फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन है एक्सेप्शनली लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज. Periodicity of electron gain enthalpy. In a group, Z effective are almost equal and atomic radius increases with increase in atomic number. So Z effective should decrease in a group with increase in atomic number. Group 1 में decrease कर रहा है. Group 16 में सल्फर टू पोलिनियम डिक्रीज करेगा, ऑक्सीजन एक्सेप्शनली लो होगा और ये घटकर सबसे कम हो जाता है. फ्लोरीन टू एस्टेटिक डिक्रीज करेगा, फ्लोरीन स्टेटस कम है मतलब फ्लोरीन के बाद आ रहा है. फॉर एटम्स ऑफ अ पीरियड Z effective increases and atomic radius decreases, so electron gain enthalpy should increase in a period, but electronic configuration has pronounced effect. लिथियम 2s1, बेरिलियम 2s2, कंफिगरेशन सबका दिया हुआ है. तो नॉर्मल इंक्रीज होना चाहिए, बट बेरिलियम हैज एक्सेप्शनली लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड सबसेल, एंड नाइट्रोजन हैज एक्सेप्शनली लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू हाफ फिल्ड सबसेल. अगेन नियोन हैज एक्सेप्शनली लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड सबसेल. So element of maximum electron gain enthalpy is fluorine. Properties of elements depending on electron gain enthalpy. Atom with high electron gain enthalpy, more negative electron gain enthalpy, except form anion readily by accepting electron. So element with greater electron gain enthalpy has non-metallic character. Greater reactivity as non-metal, क्योंकि आसानी से मेटल बने, anion बना रहा है. Greater oxidizing character, oxidizing agent electron acceptor होता है. And more acidic character, acid भी electron acceptor होता है. Electronegativity, the tendency of nucleus of an atom to attract paired pair of electrons is called electronegativity. It is a hypothetical concept and cannot be measured experimentally. The electronegativity is measured as relative value as follows. मोलिकन कह रहे हैं it is equal to I plus Ca by 2 एवरेज वैल्यू, अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रहे हैं और किलो जूल पर मोल में दे रहे हैं तो I plus Ca by 2 into 96.48. According to Pauling, इलेक्ट्रॉन में equal to I plus Ca by 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 5.6 या 2 into 2.8 लिखते हैं तो Pauling स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव मोलिकन के
xm by 2.8 हो जाता है। फॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू, ये इक्वेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस AB, bond enthalpy of AB bond, A is the bond enthalpy of bond। अगर किलो कैलोरी में दे रहे हैं तो इक्वेशन ये है, और किलो जूल में दे रहे हैं। इन पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का 4 लिया गया है, हाइड्रोजन का 2.1 है, नोबल गैस का 0। इस बेसिस पर डिफरेंस निकाल के वैल्यू देते हैं। एलॉर्ड एंड रॉको स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहा जा रहा है, दिया गया 0.744 प्लस 0.35 जे डिफेक्टिव बाय द कोवेलेंट रेडियस का स्क्वायर। फॉलिंग स्केल से इसका ये रिलेशन है। In general, falling scale of electronegativity is generally used. Factors affecting electronegativity: greater value of Z defective in atom results greater electronegativity because stronger force लगाएगा। एटॉमिक रेडियस ग्रेटर होने पर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स वीक पड़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। एटम विथ ग्रेटर ऑक्सीडेशन नंबर है ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर सेम एलिमेंट का एटम है तो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑक्सीडेशन नंबर से बढ़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन एलिमेंट यूजिंग p ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल विथ ग्रेटर s कैरेक्टर है ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल कार्बन sp sp2 sp3 s कैरेक्टर 50%, 33% एंड 25%। Periodicity of electronegativity. Electronegativity should decrease in a group with an increase in atomic number due to increase in atomic radius and almost equal value of their defective. Electronegativity should increase in a period with increase in effective nuclear charge and decrease in atomic radius. Noble gas का 0 है। Most electronegative element fluorine, second most oxygen है, and least electronegative helium है। Application of electronegativity. First, strength of covalent bond. आपने पढ़ा था कि DAB इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। नेचर ऑफ बॉन्ड ये इक्वेशन है। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के लिए तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से ज्यादा रखते हैं एटम के बीच तो आयनिक कैरेक्टर मोर देन 50% होगा और ये आयनिक बॉन्ड कहलाएगा, और लेस देन 1.1 आयनिक कैरेक्टर लेस देन 50% होगा और ये कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, as we know that ionic oxide and hydroxides of metals are basic and covalent oxide and hydroxides of non-metals are acidic. So atom with lower electronegativity में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने पर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो फॉर मोर बेसिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एंड वाइस वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एटम विथ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज or more ionic oxide and hydroxide and has more basic character and vice versa. Base हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, इसलिए बेसिक एसिड इंक्रीज कर रहा है। इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, इसलिए बेसिक एसिड डिक्रीज कर रहा है और एसिडिक एसिड इंक्रीज कर रहा है। एसिडिक एसिड इन ए ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिक्रीज से एसिडिक एसिड डिक्रीज करेगा, बेसिक एसिड इंक्रीज कर रहा है। यहाँ एसिड का ऑर्डर है तो एसिडिक एसिड डिक्रीज कर रहा है। HClO3 HBrO3 एसिडिक एसिड डिक्रीज कर रहा है। फॉर द सेम एटम ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज किया है, इसलिए एसिडिक एसिड इंक्रीज करेगा। एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4 and N2O5 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, इसलिए एसिडिक एसिड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नाउ डायगोनल रिलेशनशिप, फर्स्ट और सेकंड पीरियड के मेंबर को लिखा, ये तीन पेयर डायगोनल रिलेशनशिप को करते हैं बिकॉज इनका एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए ये अलग ग्रुप में होने के बावजूद भी
कुछ सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, इन्हें कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। एबनॉर्मल बिहेवियर, फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिलोंगिंग टू सेकेंड पीरियड हैज वेरी स्मॉल साइज, greater electronegativity and no vacant d orbital in outermost orbit। इस कारण से अदर ग्रुप मेंबर से कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। टिपिकल एलिमेंट, सेकेंड पीरियड का ग्रुप एस और पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसे टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ऑल एस एंड पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। दैट्स ऑल। ये पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो रहा है। अगला सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग शुरू करूंगा। सब्सक्राइब माई चैनल, press the bell icon for proper notification and share to your friends also. Thank you.